यस वीडियो में हामी चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसनको युनिट दोस्रो बिजनेस कम्युनिकेसन क्वेश्चनको एन्सर पढ्ने छौँ, जुन कि इक्जामको लागि अलिकति प्रिपेरेसन भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्कसन क्वेश्चन, जसको पहिलो क्वेश्चन हो डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेसन। व्यावसायिक सञ्चारको परिभाषा के हो? Business communication is the process of sharing information between people with and outside a company. Effective business communication is how employee and management interact to reach organizational goals. Its purpose is to improve organizational practice and reduce errors. दूसरो क्वेश्चन रहेको छ, what is the difference between making sense and sharing sense? Making sense means to have clear understanding. Sharing sense gives making sense. Here sense means meanings, idea and thought. तेस्रो क्वेश्चन रहेको छ, what is the function of business communication? The most basic function of communication is an organizational or to inform, persuade and motivate. चौथो क्वेश्चन हो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आर वाइड एंड लार्ज इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, परमिशन, वार्निंग, मोटिवेशन, एडवाइस एंड राइजिंग मोरल आर एक्टिवेटेड थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आर स्टार्टेड ब्लू तल दिएको छ ऑब्जेक्टिव ऑफ टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जिसमें द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली. एग्जाम्पल, टू डील विथ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल. दोस्रो हो टू अचिभ गोल, गोल अचिभ गर्नको लागि ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन को आवश्यकता पर्छ. सी, टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. 4, टू प्लान. 5, to faculty direction and motivations. 6 हो, communication can provide information regarding past and present. 7, to solve problems. 8, to create consciousness. यहाँ 5 नंबर को क्वेश्चन अब आउँछ, व्हाट इज द रोल अफ बिजनेस कम्युनिकेसन इन मैनेजमेंट? मैनेजमेंटमा बिजनेस कम्युनिकेसनको के रोल रहेको छ? नंबर 1, कम्युनिकेसन एंड डिसिजन मेकिङ. कम्युनिकेसन र डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेशन को रोल हुन्छ. जैसे मैनेजमेंट इज टू टेक डिसीजन इन डिफरेंट एरिया फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजमेंट टेक प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन रिलेवेंट एरियाज. दूसरो, कम्युनिकेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ प्लान. प्लान आर मेड टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी efficiently and planning requires gathering necessary information. Business communication helps collecting the relevant data from different sources after the plan has been prepared. It requires implementations and business communication plays a vital role in the execution of plan by calculating them among the officer and employees and by giving them necessary direction. C, communication and mutual understanding and cooperation. Effective business communication between the management and the employee helps to bring about an atmosphere of mutual trust and confidence. If the employee know exactly what is expected from them and if the management is aware of the potentialities and limitation of the employee, both sides will get better returns. D, communication and planning. Planning is one of the most important management function. Business communication faculty is the planning process by supplying information, options, idea, logistics, etc. from various quarters within and outside the organization. Without proper business communication, no effective plan can be made and carried out. Communication and elimination of rumor. E number. F number, communication and motivation.